months ago, and few services in preview. So some services not allow me to actually create one, and some services is actually not in the region basis. So here I can actually train my model. So I have actually choose a subscription. So this is very important subscription. So they can use enterprise subscription and different way of subscription you can use. But I am using my own personal MCD subscription, Microsoft Certified Trainer subscription. So I have a Visual Studio subscription and I have upgraded. So I can use this one, and after this session I can kill the instance and shut down the services. It's not gonna bill me. Continue. Here I can click on Visual Studio Enterprise subscription, and let me choose a resource group. I can choose a resource group. By the way, this resource group I have already created. Where I can create it, I can show you here. Some resource group here, and I'm gonna choose RG2711AI. Okay. So far I have few applications and some keywords and different kind of application I have. What I can do, I can choose the same resource group here and choose the location. Location can be choose a basic, free tier. It depends on the tier model you can use. You can use a premium one, basic one, and standard one. So I think I can go with the basic one because I'm just gonna deploy my web app. B1 and enhance China web app. I don't need it, and I can deploy. Before deploying this application, you have this view pricing. Yes, it's some very expensive services. View services on the cloud is not free and it's not cheap when you're working on the cloud. Especially security and monitoring, application inside and pipelining. These are actually one of the expensive services. So you can actually check your pricing calculator here, or you can go to TCO, total cost of ownership in Azure. So where you can actually estimate your cost first and then you can create your services. But this is a demo, so we have a very short time, so that's why I'm just creating a demo or maybe step-by-step. Here you can check. It takes few minutes, maybe 1 or 2, but still in the preview, might have not failed this. It's gonna take a few seconds or maybe a minute, and then I can get some answers from top of it. So here we have deployment stuff. So where I can go, I can show to the actually one try with me as well. So for example, और आप यूनिवर्सिटीज में पढ़ रहे हैं और आप ये चाह रहे हैं कि मैं उसी चीज़ को लेके अपनी कंटिन्यूटी करूँ जो लेटेस्ट स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजीज चल रही है ग्लोबली इंडस्ट्रीज के अंदर, और मैं वो सीखना चाह रहा हूँ, कोई कोर्सेज नहीं हो रहा है, या वो चीज़ ऐसी है कि मैं बहुत पीछे हूँ। यहाँ पे अभी बात हो रही है एक्सेल की और इन हाउस सॉफ्टवेयर डेवलप्ड हो रहा है, लेकिन एक ग्लोबली एक पूरे प्लेटफॉर्म्स है जो कि यूनिफाइड प्लेटफॉर्म है फॉर डेटा साइंटिस्ट, डेटा एनालिटिक्स, डेटा इंजीनियर, मशीन लर्निंग इंजीनियर, एआई, सो फार सो ऑन। तो किस तरीके से आप इस प्लेटफॉर्म पे जाके आप ट्रेन हो सकते हैं और आप ये लैब परफॉर्म कर सकते हैं जिसमें आपको प्रॉपर गाइड और सारी चीज़ें आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड होती है। तो ये बेसिकली स्केलेबल ऑन डिमांड एक लैब है जो कि मैंने ऑलरेडी परचेज की है ताकि मैं आपको डेमोस्ट्रेट में दिखा सकूं और किस तरीके से आप इसको फ्री लाइसेंसिंग को यूज़ करते हुए माइक्रोसॉफ्ट फैब्रिक अकाउंट के अंदर आप यूज़ कर सकते हैं। यूजुअली होता ये है कि कुछ क्रेडेंशियल्स ऐसे होते हैं माइक्रोसॉफ्ट के जो कि आप इंटरप्राइज लेवल पे यूज़ करते हैं। उसके अंदर इश्यूज ये होता है कि आपके पास या तो कोई यूनिवर्सिटी का कोई डोमेन हो, फॉर एग्जाम्पल लाहौर पंजाब यूनिवर्सिटीज़ और कराची यूनिवर्सिटीज़ और व्हाटएवर, और उस डोमेन के थ्रू आप एक्सेस करें अपनी वेब एप्लीकेशन और जो भी कोई इस तरीके इंटरप्राइज लेवल सोल्यूशन प्लेटफॉर्म है। लेकिन इस प्लेटफॉर्म पे होगा ये कि आप इस तरीके से ऑलरेडी एक इन्वायरमेंट हाइपर भी मशीन पे क्रिएट हुआ हुआ है, आप उसके ऊपर जाके इंस्ट्रक्शन फॉलो करेंगे एंड देन यू कैन कंटिन्यू। It's gonna be take much time to deploy unfortunately, so मेरे पास टाइम थोड़ा सा कम है तो we have to just call off here, but again here's actually the quick overview about AI Foundry जो कि आप यूज़ कर सकते हैं अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर AI.Azure Foundry, and here you can actually train your model, deploy your application first, and here you can actually use the AI enabled Foundry.
So that's the one. So we are running out of time, so unfortunately I prepared 2-3 demos, but we have only 30 minutes slot, so I think we are good to go with that side. But this is a deploy one application, and this is a train model I can use for AI modeling and model training. So yeah, thank you so much. If you have any questions at the backstage, you can feel free to reach out to me, and this is my LinkedIn. You can just connect. Okay, thank you so much. The speakers, there's a lot to